Hi guys, I am Sarthak and I am currently pursuing BSc Biomedical Science from Acharya Narendra Dev College. So I welcome you all on my YouTube channel Neet. So today we'll be discussing about Kelvin cycle, which is very important from board's point of view, also even Neet point of view. तो ये साइकिल बहुत सिंपल साइकिल है बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है बिकॉज डायरेक्टली साइकिल को देख लेते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है. So I'll try to ease out things with you and जो basic things मुझे आती है. I'm not a teacher, but yes, I'll facilitate the cycle to you. And if you find it fruitful, important, useful, so do like it, do subscribe it, ठीक है? And keep supporting me for more such content. Thank you. So let's start. Yeah. So the Kelvin cycle was basically also known as Kelvin-Melvin cycle. Okay, so Kelvin and his co-workers, when they worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. So obviously cyclic manner इसलिए बोल रहे हैं because ये cycle है. कोई एक ऐसा particular enzyme होगा जो हमारे reaction में starting में आएगा और उसके बाद जब ये reaction complete हो जाएगी तो ये चला जाएगा. सबको पता है कि enzyme reaction में पार्टिसिपेट करते हैं बट वो यूज्ड अप नहीं होते हैं. ठीक है, so they only facilitate the reaction so that the equilibrium reaches faster. So the RUBP, okay, so since this is the pathway which works in a cyclic manner, the RUBP was generated, ribulose bisphosphate, bis 1,5-phosphate, right? So let us now discuss this pathway. I'll read out the NCERT first, so NCERT से भी relate हो जाएगा. Let us now see how the Kelvin pathway operate and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occur in all photosynthetic plants. So it does not matter whether they have a C3 or C4. ठीक है, pathway. So for ease of understanding, जो Kelvin cycle है वो 3 stages में है. ठीक है, 3 stages कौन सी है? First is carboxylation, second is reduction and third is regeneration. ठीक है, तो carboxylation में something has to do with CO2. The reduction, something will be reduced to a certain product, and regeneration में what will happen, your enzyme जो है enzyme आपको वापस मिल जाएगा और जिस substrate से आपने start किया था, you'll get that for the continuation of the Kelvin cycle. Now this carboxylation is the fixation of CO2 into stable organic intermediate. Whatever atmospheric CO2 that is available will be utilized in the carboxylation step. The carboxylation is nothing but the fixation of the CO2. कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को ही हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं और इस CO2 को हम एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है केल्विन साइकिल का बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, जहाँ पे CO2 यूटिलाइज होगा. कौन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगा? Ribulose 1,5-bisphosphate will utilize it. So this reaction is catalyzed by the RUBP carboxylase. So the carboxylase enzyme will catalyze the reaction. Yeah, so the two molecules of 3-PGA will be formed, that is phosphoglyceric acid. So since this enzyme also has an oxygenation activity, ठीक है, जो RUBP है RUBPCO, so this is Rubisco. सबको पता है Rubisco क्या होता है. इसके पास कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की एफिनिटी होती है, बट जो ज़्यादा अवेलेबल होगा, अगर कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो आपका सी एंड विल बी मोर एक्टिव, एंड अगर ऑक्सीजन आपके पास ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेज विल बी एक्टिव. सो यस, इट हैज़ 2 ends. So yeah, we can call it as Rubisco. Just a second. Yeah, so this is the cycle, the Kelvin cycle, which we'll be studying. Now in this cycle, ये cycle पहले कहाँ होती है हमें ये पता होना चाहिए. This cycle happens in stroma. ठीक है, स्ट्रोमा में ये साइकिल होती है. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है,
that will combine with the ribulose 1,5 bisphosphate in the carboxylation process, and it will generate an organic intermediate, that is 3PG. सो एक CO2 मॉलिक्यूल और एक राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट से हमारे दो मॉलिक्यूल 3PGA के जनरेट होंगे. Now this 3PGA will further be reduced to triose phosphate. ठीक है, तो ये जो रिडक्शन है, it is an energy required process, so that is why 2 ATP will be used. ठीक है, और प्लस 2 NADPH will be also used. सो पर CO2 एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हमारा 2 NADPH और 2 ATP यूटिलाइज हो रहा है. Now ATP and NADPH will be converted into adenosine diphosphate और inorganic phosphate plus NADP positive. Now जो रिडक्शन है हमारा 3PGA मॉलिक्यूल का वो ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. Then this triose phosphate will further be modified into glucose, and glucose के बाद modify होके वो सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, सुक्रोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. Now this triose phosphate, अगर ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है तो की बात है. If it goes on, the triose phosphate, yeah, like this is your product, you'll get it, but the triose phosphate will further regenerate, है ना. The reaction has to undergo in a cyclic manner, so cyclic manner होने के लिए regeneration will happen. The one for that regeneration, it is also an active process, इसीलिए वहाँ पे भी एक molecule of ATP utilize होगा जो कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, and you will get back the ribulose 1,5 bisphosphate for your further reaction. Now we'll read the content कि क्या given है. So these are the series of the reaction that lead to the formation of glucose. The steps involve utilization of the two molecules. This is the highlight part. The two molecules of ATP for phosphorylation and two molecules of NADPH for per CO2 molecule reduction. So the fixation of CO2 molecule, अगर फिक्सेशन हमें 6 मॉलिक्यूल CO2 का करना है and 6 turns of the cycle will be required. So अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज contains how many carbons? 6 कार्बन, C6H12O6. तो उसके लिए हमें 6 टर्न्स 6 बार साइकिल को रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ATP और NADPH लगेगा. तो जितना भी हम CO2 को फिक्स करेंगे, तो अगर फिक्सेशन हम कर रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल की, तो दैट मच अमाउंट ऑफ ATP as well as NADPH will be required. Now regeneration is very important step so that the reaction cycle and mechanism continues. So the regeneration of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. ठीक है, for that process 1 ATP is required. एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो ये हमारा PGA मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. PGA मॉलिक्यूल कंटेन 3 कार्बन एंड हमारा जो RUBP है that contains 5 कार्बन. So 5 कार्बन से हम 3 कार्बन पे आ जाते हैं. ठीक है, so this is the primary acceptor of CO2. Primary acceptor of CO2 is RUBP. Let me add the content also. Yeah. So primary, अगर हम primary acceptor कभी कोई पूछे कि primary acceptor कौन है C3 साइकिल में, C3 साइकिल में, तो primary acceptor कौन है हमारा? RUBP है, RUBP है. और अगर हमारे को कोई पूछेगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा 3PGA मॉलिक्यूल है. ठीक है, 3PGA regeneration. Okay, so this is a small exercise is also given कि for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle 3 molecule of ATP and 2 NADPH are required. अभी हमने ऊपर पढ़ा, but it is probably to meet the difference in the ATP and NADPH. So जो light reaction में जो product ATP और NADPH
जो बने थे वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। ठीक है, तो अगर हमें एक जैसे अगर हमें ग्लूकोज बनाना है C6H12O6, तो वी हैव टू give 18 ATP and 12 NADPH. We'll get 18 ADP and 12 NADP out. So this is for one glucose molecule. But अगर आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन मॉलिक्यूल के लिए करना है, तो you'll require 3 ATP and 2 NADPH. तो हमने कैसे किया? We divided 18 by 6, right? and यहाँ पे 12 by 6, क्योंकि यहाँ ये 6 कार्बन के लिए है, ये 6 कार्बन के लिए है, और हमें अगर एक कार्बन के लिए चाहिए तो फिर हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 3CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितना है, 4CO2 मॉलिक्यूल के लिए। Okay, so that's all in C3 cycle, Kelvin cycle. Still, if you face any difficulty in your portion, so do comment and do let me know. I'll try to figure it out, like कि क्या प्रॉब्लम आपको अभी भी आ रही है। Thank you very much, and if you find it useful to you, do like it and subscribe it. Okay, thank you very much, and study smart.